Akram Raja challenged this action by the returning officer of his constituency before the commission. By its order dated 2nd February 2024, the commission rejected his challenge and declared him as independent candidate. उन्होंने वही बात की थी सलमान ने कि मैं पीटीआई का ही कैंडिडेट हूँ, आप बेशक जो भी मुझे सिंबल देते हैं, मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूँ। तो क्या हुआ आगे इसको जरा कंप्लीट कर दें, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक देखिए सलमान राजा साहब बैठे हुए जी, उन्होंने चैलेंज की उस ऑर्डर को हाई कोर्ट के सामने। जी जी, हाई कोर्ट ने रिमांड कर दिया, ऑर्डर को सेट असाइड कर रिमांड करके कमीशन को कहा आप दोबारा देख लो। राजा साहब ने उस रिमांड ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मीनवाइल कमीशन ने वो एक्सप्लेन कर सुनिए कंटिन्यूएशन जारी। जी जी सही कह। मीनवाइल कमीशन ने दोबारा ऑर्डर किया इनके खिलाफ। जी जी, दैट ऑर्डर वाज नॉट चैलेंज। जी जी, मैं आता हूं, जी जी जी, वो आपने चैलेंज नहीं। द पोल फॉर द इलेक्शन, ये बात दुरुस्त है कि ओनली सलमान हैड द लीगल understanding that they are misinterpreting the order of the Supreme. What do you mean? The rest of the sir, मेरे ख्याल में उस वक्त समझ में नहीं आई। मेरे ख्याल में मान लेना चाहिए, जब गलती है तो क्यों नहीं माने। सर देखिए आप लोग बारी आएगी। But Mr. Siddiqui, it is nobody's case that the PTI doesn't exist as a political party. जी बिल्कुल बिल्कुल, it has not been dissolved as already observed by this court, either by the Supreme Court or something. आपने कहा शायद खुद से समझ लिया था जी बिल्कुल सही। लेकिन ये भी बात नहीं, पीटीआई ने भी अपने आप को ये नहीं समझा कि पार्टी नहीं हो। क्यों? इसलिए कि उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किए, उन्हें पता था कि स्टिल दे आर पार्टी डिस्पाइट द फैक्ट वो ये समझ रहे थे। उस पे कंफ्यूजन आती है ना बाद में जब वो एसआईसी ज्वाइन करते हैं उस पे। बट लेट मी कंप्लीट द फैक्ट्स बिकॉज आई कैन सी योर लॉर्डशिप्स हैव रियली वेरी क्विकली ग्रास्प्ड द फैक्ट्स ऑफ द केस। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सर आपको तो 2 महीने हमने इन अ सेंस विद ड्यू रिस्पेक्ट सर खाया है, तो इसलिए द पोल फॉर द इलेक्शन वाज देन हेल्ड ऑन 8th February 2024 and PTI candidates were notified by the commission as independent returned candidates in the notification published in the official gazette under section 98 of the Elections Act 2017. तो सिंबल नहीं मिला, इंडिपेंडेंट्स कंटेस्ट किया, उनको डिक्लेयर किया एज इंडिपेंडेंट्स अराउंड ओवर 80. They filed nominations by declaring that they are members of any party. इस पे भी कंट्रोवर्सी है जो है कि कितनों ने किया कितनों ने नहीं किया, लेकिन बहुत ने किया। आफ्टर 39 पे कंसेंसस है। After the publication of Section 98 notification, a substantial number of independent returned candidates, 86 for the National Assembly, 107 for the Punjab Assembly, 90 for the Khyber Pakhtunkhwa Assembly, and 9 for the Sindh Assembly joined a political party, Sunni Ittihad Council, to obtain the share of proportional representation in the seats reserved for Muslim women and non-Muslims in the National Assembly, Pakhtunkhwa, Punjab, and Sindh. SIC, which is the Sunni Ittihad Council, then informed the Commission of the joining of these returned candidates and requested the Commission through 4 separate applications, letters dated 21st February 2024, to allocate to it its due share in the seats reserved for the women and non-Muslims in the National Assembly and the set 3 provincial assemblies. Actual list यहाँ से start हुई। So they were under the understanding that if they join the PTI, they will not get reserved seats. So they joined another party, which is SIC. Para 17. अब उसके बाद ज्वाइन करके SIC then filed application for these leftover reserve seats. और उसी पे पैरा 17 में बड़ा इंपॉर्टेंट है, certain other political parties such as Pakistan Muslim League Nawaz, PMLN and Muttahida Qawmi Movement. At this stage, for correctness, these were not the leftover seats. Actually, someone challenged the allocation of these seats in the Peshawar High Court, and there were some injunctive orders. Therefore, these seats were not allocated and kept
for distribution in accordance with the proportionate representation. Let us not use the word leftover, seats which were not allocated. Let us say Not that. allocated. वो आगे तो आ रहा है ना वो Let's- एप्लीकेशन जो जी, उन्होंने जी, जी। फाइल दी नहीं, चलिए, एप्लीकेशन नाम- नो यू आर राइट कि SIC शुड नॉट बी गिवन Leftover दीस तो फिर सीट्स इसी पे झगड़ा शुरू हुआ नहीं, ना, नहीं। लेफ्टओवर है तो फिर कोई बात- दोबारा उनको नहीं जा सकते. नाम से कुछ नहीं है. शेक्सपियर would say a rose by any other name would still be a rose. तो These were not उसको the जो भी कह leftovers. दे. आप आगे पढ़ेंगे तो आगे clear हो रहा है ना पढ़ेंगे। जी, जी। लेफ्ट ओवर से थोड़ा सा कंफ्यूजन ये पैदा हो रहा है कि जैसे कि फिक्स फार्मूला है हाँ, कि इतने लोगों को इतने उससे ज्यादा मिलेंगे, नहीं मिल सकते। बकाया बच जाएंगे, बाकियों को नहीं मिल सकते. सपोज जैसे किया जा रहा है कि ये अगर किसी की एक सीट है उसको कैसे 2 मिल सकती है, कैसे 3 मिल सकती है. कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता. हमारा केस यही है. लेकिन let us not say leftover. Let us say seats which were not allocated. जैसे Para आपको 70. एक पॉइंट ये था ना कि क्या इनको खाली रखा जाए जी जी अगर नहीं जी 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 इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल. Para 17. जी Certain other parties such as Pakistan Muslim League Nawaz, PMLN, and Muttahida Qawmi Movement Pakistan, MQMP, filed application opposing SIC requests for reserved seats and played for the allocation of the reserved seats to them and other eligible political parties. Some individuals also filed applications opposing the SIC request and praying that SIC should not be treated as a parliamentary party. यानी इसमें तो इंडिपेंडेंट्स भी ज्वाइन नहीं कर सकते. कुछ एप्लीकेशंस ये थी. The political parties, Pakistan People's Party parliamentarians appeared before the commission as a pro forma respondent in the application filed by MQM-P, while the political parties JUIP and Pakistan Muslim League appeared in response to the commission's notice and opposed SIC's request. So your lordship can see that this is a dispute about the seats which have not been allocated. इससे पहले let me clarify, PMLN, PPP, MQM have already been allocated seats according to their proportion. अब ये जो सीट्स हैं जो एलोकेट नहीं हुई हैं, जो SIC क्लेम करता है, जो बाद में इस कोर्ट ने कहा कि ये PTI को जाएंगी, उसके ऊपर भी ये बाकी पार्टीज ने क्लेम किया क्योंकि उन्होंने कहा ये भी हमें मिलनी चाहिए. दिस इज द केस एक्चुअली. यही प्रॉब्लम ये था. उस वक्त उन्होंने ये सीट्स रोक ली ड्यू टू द लिटिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ सर झगड़ा ये ECP ने यही डिसाइड किया. अब एक पॉइंट आप प्लीज अपने जहन में, क्योंकि आई विल आर्ग्यू मेंटेनेबिलिटी ऑन दिस. द डिस्प्यूट बिफोर द ECP is या तो ये between पूरे काम कीजिए ना, ये पूरे फैक्ट्स पढ़ दीजिए ना. एक पैराग्राफ 18 रह गया, वो जी, भी पढ़ें बिल्कुल फिर सही आगे कहा. चलेंगे. I stand corrected sir. Para 18. ऐसे आज आप अपने पुराने फॉर्म में जो आपका स्टाइल आप अपने रिवाइव कर लिए. तो काफी देर से आप इस इंतजार में नहीं नहीं थे. थैंक यू सर. सारी रात ना सोए तो दिमाग फोकस रहता है. By its order dated 1st March 2024, the Commission rejected SIC's applications and decided that the reserved seats for women and non-Muslims, which had been requested by SIC but declined, would be allocated to other political parties as per the proportional representation system of political parties. Accordingly, those reserved seats, 19 for women and 3 for non-Muslims in the National Assembly, 21 for women and 4 for non-Muslims in the KPK Assembly, 24 for women and 3 for non-Muslim in the Punjab Assembly, and 2 for women and 1 for non-Muslim in the Sindh Assembly, 78 in total. It's a huge thing. It can it can make a minority government into a 2/3 government. In total, hereafter, referred to as the disputed reserves. This is the best word, disputed reserves. Not leftover, not allocated, disputed reserves. Were allocated to other political parties. इसमें एक डिसेंटिंग वोट था ECP के एक मेंबर का, जिन्होंने कहा था कि नहीं, ये दोनों में से किसी को नहीं देनी चाहिए, खाली रखनी चाहिए, and it will require a constitutional amendment to solve this problem. SIC challenged the Commission's order before the Peshawar High Court in writ jurisdiction,
By its judgment dated 25th March 2024, the Peshawar High Court dismissed the SIC challenge and upheld the Commission's order. Hence, these appeals were filed by SIC with leave of the court. इसका मतलब ये हुआ, ये disputed seat still उस ऑफिसर प्रेसिडिंग रिटर्निंग ऑफिसर के डोमेन में to distribute it in accordance with Article 51 amongst those parties which are entitled. Yes, this is what your lordships have held and what the majority has held. But just three paragraph more so that it is complete. Para 19. During the pendency of these appeals, PTI filed an application seeking its impleadment in these appeals and submitting therein the facts and circumstances under which its returned candidates joined SIC. क्यों join किया उन्होंने? PTI submitted in its application inter alia that PTI issued party tickets to its candidates which were to be filed with the respective returning officers by 4 p.m. on 13 January 2024. ध्यान में रखिएगा सर, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 13 January. Denying that intra-party elections were wrongly held and as a consequence symbol was not allotted. और ये रात तक चला था, ये ऑर्डर अनाउंस हुआ है रात में? जी रात को हुआ. The day fixed for allotment of election symbol, और वही दिन था जिस दिन election symbols allot होने थे. The Supreme Court took up the Commission's appeal against the judgment of the Peshawar High Court in the matter of PTI intra-party elections and an election symbol on 12 January 2024 for hearing, which continued until late evening on 13 January 2024. 19.1. Faced with the possibility of an adverse decision by the Supreme Court, after 4 p.m. that day, PTI entered into an arrangement with another political party, PTI Nazariati, under which party tickets were issued to the PTI candidates by that party to obtain a common symbol for PTI candidates to prevent the disenfranchisement of a large part of the electorate. ख्याल ये था अलग अलग सिंबल्स पे इलेक्शन लड़ेंगे तो इतनी कंफ्यूजन होगी इलेक्शन में कि कभी जीत नहीं सकेगी. दैट इज व्हाई दीज अरेंजमेंट्स. ये फैक्ट्स कहां से आए? प्लीडिंग्स तो नहीं थी कोर्ट के सामने. ये फैक्ट्स कहां से आए? ये फैक्ट्स कहां से आए और ये प्लीडिंग्स कोर्ट के सामने नहीं थी. ये इस एप्लीकेशन में थी. जी मैं पढ़ देता हूँ, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ. इट्स अप टू योर लॉर्डशिप्स टू एग्री और नॉट टू एग्री. However, the same day, the chairman of PTI Nazariati appeared on national TV channels and disavowed the tickets issued. At about the same time, the Commission also issued an order dated 13 January 2024 directing, important, the returning officers not to accept a political party's tickets for candidates who belong to another political party. ये order record पे. Therefore, most of PTI candidates withdrew the tickets of PTI Nazariati and presented PTI tickets to the returning officers. Some of the returning officers placed the same on file, while others refused to receive the same pending the decision of the Supreme Court. This is a factual controversy. See, let me just, because it's part of the majority judge. 19.2. Awaiting the decision of the Supreme Court, the Commission extended the time for submitting the party tickets and allotment of election symbols till 12 p.m. That day, the Supreme Court announced its short order at about 11 p.m. on January 13 January 2024, whereupon the returning officers, now it's important, rejected PTI's tickets and by treating PTI candidates as independent candidates, allocated them different election symbols. इस पे झगड़ा है कितनों ने जमा किया था कितनों ने नहीं जमा किया था. The poll was held on 8th February 2024 and PTI candidates won a large number of seats in the National and Provincial Assembly. These candidates were notified as independent return candidates by the Commission by relying on Rule 94 of the Election Rules 2017 and the judgment of the Supreme Court dated 13 January 2024. ये बहुत अहमियत होगा जब मैं आगे पढ़ूंगा क्योंकि Rule 94 की explanation है जो ये कहती है कि जिस पार्टी के पास सिंबल नहीं है
उसको रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती. तो in the presence of that explanation, the PTI was fearful that it will not get reserve seats. That I is think why it did separate not. section is also there. In the Election Act, not on the rules, there is a section There's a section. for claiming symbol. और वो explanation भी strike down की है majority judgment ने. Election कभी Act इसको भी देना, challenge किया Election किसी ने? Act और rules देना है. कभी उस एक्सप्लेनेशन को किसी ने किसी स्टेज लोअर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था, इधर नहीं हुआ था. ये आपकी बात दुरुस्त है. देखिए Let me just उससे फैसल देखिए ना, उससे आगे चले गए जब बस मैं एक लास्ट 4 लाइनें पढ़ रहा हूँ, 4 लाइनें पढ़ रहा हूँ, बस खत्म. आपने इशारा किया, मैं खत्म फौरन खत्म कर देता हूँ. बड़ी जबरदस्त आज तो पैरा नहीं पढ़ना ही नहीं, वो कल आपने अपने ऑर्डर बहुत पढ़वाए हैं पूरा टाइम आपने अपने ऑर्डर पढ़वाने में बता दिया. Para 19.3. The Commission has earlier accepted in 2018 a political party, Balochistan Awami Party, which had not contested for general seats, eligible for the allocation of reserve seat. Therefore, PTI-backed return candidate join SIC, with which PTI had an ongoing relationship within 3 days of being so notified. तो ये बैकग्राउंड था इस कंट्रोवर्सी का कि किस तरीके से ये इलेक्शन से निकला. एक तो इसका इलेक्शन का बैकग्राउंड है जो आपके सामने आया, फिर इसका एक लिटिगेशन का बैकग्राउंड है जो आपके सामने आया कि एक ईसीपी का ऑर्डर है, फिर एक पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एंड देन देयर इज द जजमेंट अंडर रिव्यू. ठीक है, तो आई कंप्लीट माय फैक्ट्स एज फार एज दिस इज कंसर्न. नाउ let me come to my first point. My first point is, and it's the question which your lordships. First of all, you must explain whether you agree that SIC is not entitled for the reserve seat. I agree with the majority judgment. Which says that SIC is Yes, I agree. and agree that the persons that he joined you were then